लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, नहीं सॉरी, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व पढ़ा ना? Yes, sir. सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व और मीनिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई एंड स्टॉक, Yes, sir. डिस्टिंग्विश क्या है इसमें? तो वहाँ हमने डिस्कस किया है जो सप्लाई होता है दैट इज द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल, willing and able Yes, to sir. sell, ready for sale, that quantity which a seller or producer is ready to sell. Yes, sir. The stock is that quantity which is not ready for sell. Yes, sir. It is stocked. It can be sold if market prices are favorable. If prices sir. are good for in favor of the seller, then and then Seller, yes. he or she may offer that quantity for sale and the supply is flow variable that continuously changes. Already मैंने बताया आपको what is stock variable and what is flow variable. Stock वो Yes, sir. होती है which do not change over time, Yes, sir. remain the same, but flow variable is that variable which changes over time, whose quantity, whose number or whose nature changes from time to time. हमने ये चीज भी डिस्कस की है, the supply changes with the change in price mainly. It changes with so many factors, but main factor is price. Whenever Price, there is yes, sir. increase in price, supply also increases because at higher prices the sellers or producers expect much profits, good profit at higher prices. At lower prices the supply decreases. Yes, sir. क्योंकि profit कम होता है. Yes, हमने वो एग्जांपल भी यहाँ कोट की है, डिस्कस की है. As fruit growers, as agriculturalists, when we see in the mandi, fruit mandi, the prices are rising, we supply more and more to the fruit mandi Sopor or fruit mandi Srinagar or fruit mandi in this Delhi or Agra, etc., etc. But when Yes, we sir. hear that prices have gone down, so we expect less profits and we supply less and less. Today we will discuss very important topic, that is factors affecting Supply. Factors affecting supply, Supply. or whom we call determinants of supply. Of supply, yes, sir. Determinants of supply. Determinants of supply. Supply. Determinants. Those factors which determine the supply. Supply. कौन से फैक्टर सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं मार्केट में सप्लाई कम रहेगी या ज्यादा रहेगी, या एक सेलर या एक प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेगा या कम सप्लाई करेगा. It depends upon so many factors in addition to price. Of course, price is main factor, but sometimes other factors also play their role, keeping price constant. There is no change in price. Even the supply sometimes changes. We see change of supply in the market. Other factors. So that is the role of other factors there. उस वक्त other factors का role आता है. सही है? Yes, sir. रेहाना ने ये जो ऑडियो है, ऑडियो भी बंद रखा है. रेहाना ने ऑडियो भी बंद रखा है. अच्छा, what are the factors which affect the supply of a commodity? Which affect the supply of a commodity? The factors affect the supply of a commodity. The supply of a commodity changes due to change in a number of price of a commodity. Supply changes Due to change in own price of commodity. Changes. Supply of a commodity changes due to change in so many factors. Due to change in a number of factors. In a number of factors. These factors are called determinants of, which are called determinants of supply. Which are called determinants of supply. Determinants of supply. उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? Determinants of supply.
अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई determine करते हैं supply. So the Yes, sir. factors which affect or change the supply of a commodity, or those factors or those things which brings a change in the supply of a commodity in the mind of a producer or seller, those are called determinants of Supply. Determinants of supply. So what are those Supply. determinants? Those Sir, price of own commodity, price yes. of related commodity. First factor is price of the commodity. जिस commodity की बात हम करते हैं, हम एक ही commodity की बात हम करते हैं, तो price of the commodity, own price of the commodity. अगर हम इस कलम की सप्लाई की बात करते हैं, इस पेन की सप्लाई ज्यादा रहेगी मार्केट में या कम रहेगी मार्केट में, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स प्राइस. मार्केट ने इस प्राइस इस कलम इस पेन का प्राइस क्या डिटरमाइन किया, क्या फिक्स किया हुआ. अगर इसका प्राइस ज्यादा हो तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, अगर इसका प्राइस कम हो तो प्राइस भी ये सप्लाई भी कम होगी. So there is positive or direct relationship between price and supply demand, quantity supply, and that is why we see an upward sloping supply curve, जो yesterday हमने देखी भी है. On the basis of supply schedule, तो हमारी जो supply curve वहां बनी वो upward sloping थी, which shows direct relationship between price and quantity. So the first factor which changes the supply of a commodity, that is price. So this is prime factor. हम कहते हैं इसको prime factor, primary factor, पहला factor जो है. So the supply of a product, supply हम आगे इसको लिख सकते हैं, supply of a product changes due to change in the price of its own price, due to change in its own price. Other thing is remaining same. अगर other thing is same भी रहे, other thing is remaining same. Other thing is remaining. So supply of a commodity changes due to change in its own price. Other thing is remaining same. There is positive or direct relationship between price and quantity supply. Very good. Between price and quantity supply. So direct or positive relationship between two factors or two variables means when one variable increases, other also increases. अगर वो दाएं जाएगा वो भी दूसरा भी दाएं जाएगा, अगर बाएं जाएगा तो दूसरा भी बाएं जाएगा, अगर कोई आगे जाएगा तो दूसरा भी आगे जाएगा. तो उन दोनों के दरमियान उस वक्त हम कहते हैं ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये पॉजिटिव रिलेशन. दिस इज पॉजिटिव रिलेशन. प्राइस ऑफ द कमोडिटी is the main factor, prime factor or primary factor which changes the supply of a commodity. Supply changes due to change in the price, other things remaining same. There is positive or direct relationship between price and quantity supply. So price is one of the important factors of supply. One of the important factors of supply. तो ये आपको पता है. अब हम दूसरे फैक्टर्स, ये हर एक को पता है, जनरली हर एक जानता है कि सप्लाई चेंज होता है अगर किसी चीज का प्राइस कम या ज्यादा हो. जो हमने कल डिस्कस भी किया है, why there is positive relationship between price and quantity. Because profit expectations are प्रॉफिट, अगर प्राइस ज्यादा हो तो प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा. तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ही करता है, सप्लाई ही करता है फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट. Yes sir. There is profit motive in the business. Always there is profit motive in the business. In the minds of a businessman. So they will supply more at higher prices. They will supply less at lower price. अब हम देखेंगे दूसरी क्या फैक्टर्स कार फर्मा है सप्लाई को चेंज करने में, वो भी अपनी जगह काम करते.
वो भी अपनी जगह। Yes, sir. अगर प्राइस Price बड़ा of ही plate. फैक्टर है तो जो बाकी फैक्टर्स है वो भी अपनी जगह काउंट करते हैं इन चेंजिंग द सप्लाई ऑफ द गुड इन द मार्केट। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Price of plate. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझ आता है क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? कॉस्ट जो हमने पढ़ा है, Yes, sir. Cost production का कितना cost? Produce करने में कितना cost लगा? किसी चीज का Cost कॉस्ट कितना बन गया, किसी चीज का Yes, sir. कॉस्ट तैयार करने में कितना कितनी लागत हमें आ गई, वो उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Production. ये रेंट कितना लगा प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस प्राइस ऑफ Raw material. सारा कुछ Sir, everything. छोड़ के कितना हमें कॉस्ट बन गया, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दैट्स कॉस्ट ऑफ Yes. cost of production is the payment is made to the factors of production or payment made by the seller or producer in producing a good, that is cost, that is cost. Cost. So cost itself depends upon, cost itself depends upon, ये किस पे डिपेंड करता है? on factor prices and on factor prices. पहले मैं देखूंगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन सप्लाई, पहले ये डिस्कस करेंगे। द सप्लाई ऑफ ए प्रोडक्ट चेंजेस विद द चेंज इन costs, it is costs. When price of factors increase, it increases the cost of production, which decreases the supply. When cost of production of a good decreases, the supply increases. जो मैंने पढ़ा समझ आया, जो मैंने बताया समझ आया? Yes, अगर sir. किसी चीज का कॉस्ट बढ़ गया तो सप्लाई कम होगी। तो सप्लाई कम होगी। Yes, sir. Cost of production also plays Important. an important role, yes, important role in changing the supply, in changing Yes, the sir. supply, Supply. changing the supply of a commodity, of a good, of a commodity or good. When cost of production increases, the supply decreases. Supply decreases. And when cost of production decreases, the supply increases. हम इस तरह भी लिख सकते हैं, when cost of production increases due to increase in factor prices, due to increase in factor prices. Factor prices. जो मैं बीच में बताने लगा था ना, what is how costs of production increase or how it decreases. Cost of production itself depends upon factor prices. या हम कहाँ पहुंच गए? When cost of production increases due to increase in factor prices, the supply decreases. The supply Yes, sir. decreases. Supply यहाँ will confusion मत, ये नहीं होना चाहिए confusion. जहाँ क्या लिखा है हमने? Cost of production increases, supply decreases. यहाँ भी यही है. Cost of production increases, Yes, sir. supply One and the decreases. same thing. अब और एक चीज थोड़ी मैंने इस सेंटेंस में ऐड की है, due to increase in prices. Cost of production increases due to increase in factor prices. Due to increase in factor prices. Or when cost of production decreases due to decrease in factor prices. Due to decrease in factor price. Decrease in, ये इसका vice versa part है, यहाँ से कॉमा से आगे vice versa part है इसका, हैं? When cost of production decreases due to decrease in factor prices, the supply increases. The supply increases. Inverse relationship. Oh, so there is inverse relationship between cost of production and supply. There is inverse relationship between cost of production and supply. सुनने में ये आसान लगता है, the relation between cost of production and factor prices, लेकिन समझने में थोड़ी आपको मतलब दिमाग की थोड़ी
ज्यादा ही जरूरत पड़ेगी, है ज्यादा ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले आपको समझना है व्हाट इज फैक्टर प्राइसेस। फैक्टर प्राइस आपको पता है क्या होता है? फैक्टर प्राइसेस क्या है? हमने यहाँ लिखा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि फैक्टर प्राइस इंक्रीज हो गई। ऐसे जो फैक्टर्स हैं उनके प्राइसेस, हाँ जो फैक्टर्स हैं उनके प्राइसेस, वो फैक्टर्स क्या क्या है? वो रॉ मटेरियल है, ये लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजर है, उनके प्राइसेस। फैक्टर प्राइसेस मींस प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Here factor means factors of production. Factors of production are land, labor, capital, organizer, raw material. So यहाँ हमारी रिलेशन इस तरह है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये खुद डिपेंड करता है फैक्टर प्राइस पे। फैक्टर प्राइस पे ये खुद डिपेंड करता है फैक्टर प्राइस। फॉर एग्जाम्पल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो किस चीज का बना हुआ है? फैक्टर होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजर है। लैंड क्या लेता है? लैंड क्या लेता है? रेंट। लेबर क्या लेता है? लेबर, वेजेस। कैपिटल क्या लेता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को छोड़ो, चलो ये तीन चीजें अगर हम लेंगे, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बराबर होता है रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है? अगर ये चीजें बढ़ गई, ये सारी चीजें बढ़ गई, या इनमें से एक चीज अगर बढ़ गई, या दो चीजें बढ़ गई, या सारे बढ़ गए, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। तो समझ आ गया? अब मैं क्या बताता हूँ। अगर एक चीज को, फॉर एग्जाम्पल वी हैव प्रोडक्ट एक्स, समझो प्रोडक्ट एक्स में बनाता हूँ, ठीक है राबिया? मैं प्रोडक्ट एक्स बनाता हूँ, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल मुझे 50 रुपया होता है। ये 50 रुपया किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? फॉर एग्जाम्पल 5 रुपया रेंट, 10 रुपया वेजेस, 5 रुपया इंटरेस्ट, इसी तरह और भी चीजें, ये हो गए 20, और भी 20 रुपये, और भी 10 रुपये, ये हो गए 50। ये फैक्टर्स ने ले ली मुझसे, लैंडलॉर्ड ने ले लिया, लेबरर ने ले लिया, कैपिटलिस्ट ने ले लिया, ऑर्गेनाइजर ने, कुछ है इधर उधर बन गए। अब फॉर एग्जाम्पल लेबरर ने वेजेस बढ़ा दी, फॉर एग्जाम्पल उसने, लैंड वाले ने रेंट बढ़ा दी, उसने 6 रुपया कर दिया, इसने 15 रुपया फर्क एग्जाम्पल कर दिया, इसने 6 रुपया कर दिया, तो इसने फॉर एग्जाम्पल कोई 20 रुपया, कोई 15 रुपया, ये सारे के सारे बढ़ गए, या इनमें से कुछ बढ़ गए। फॉर एग्जाम्पल ये 20 वाला अभी भी मैंने 20 रख दिया, तो यहाँ अगर आप टोटल करोगे इट विल बी मोर देन 50 रुपीज। इट विल बी मोर देन, फॉर एग्जाम्पल कितना आ गया ये? 72, 27, 62। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया ड्यू टू इंक्रीज इन फैक्टर प्राइसेस, ड्यू टू इंक्रीज इन, फॉर एग्जाम्पल यही प्रोडक्ट जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 50 था, इसी प्रोडक्ट का प्राइस जो था फॉर एग्जाम्पल मार्केट में 70 रुपीज था, मार्केट में इसका 70 रुपीज था। पहले जब मैं ये एक्स बनाता था तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था? 50 रुपया। 50 रुपये में मुझे तैयार होता था, मार्केट में इसकी रेट फॉर एग्जाम्पल 70 रुपीज है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स, 100 क्वांटिटी इसकी मैं सप्लाई करता था। क्वांटिटी सप्लाई वाज 100, क्वांटिटी सप्लाई वाज 100। अब इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गया, वो फॉर एग्जांपल 62 बन गया। प्राइस क्या है? 70। प्राइस तो अभी भी सेम है 70, प्राइस तो इससे चेंज नहीं हो सकता है, इससे प्राइस चेंज, क्योंकि प्राइस देयर आर सो मेनी थिंग्स, डिमांड, सप्लाई, एक्स्ट्रा, वो चीजें डिसाइड करती हैं प्राइस। तो अब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 62 है, क्या मैं सप्लाई बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा?
इट्स द रोल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये मैं आपको बताता था कि थोड़ा जहन ज्यादा लगाना है, माइंड का इस्तेमाल ज्यादा करना है। अब सप्लाई मेरी बढ़ जाएगी, 100 से ज्यादा हो जाएगी या 100 से कम हो जाएगी, प्राइस सेम है। इन दिस केस जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम पढ़ते हैं, बताओ शाबाश फातिमा, सर क्या यहाँ क्या हो जाएगा? सर क्या? अभी आपको समझ नहीं आया? Cost of No, sir. production, we have cost of production, we have price, and we have quantity supply. Cost of production 50 था, price 70 था, quantity supply 100. मैं 100 यूनिट सप्लाई करता था, मेरा cost of production 50. अब मेरा cost of production 62 बन गया। यहाँ से यहाँ जो cost of production है वो फैक्टर प्राइस के बढ़ने से बढ़ गई है, वो 62 बन गया। यस सर। अब सप्लाई कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? कम कम। हाँ राबिया आप बताओ। अच्छा पहले था 50 फिर 62 हो गया 70 तो हाँ सर कम होगा। कम होगा क्योंकि यहाँ ही हमने पढ़ा है कि जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सप्लाई कम होगी। अगर प्राइस सेम भी रहेगा, प्राइस सेम रहेगा, प्राइस इस वक्त तो प्राइस चेंज नहीं है, क्योंकि जब हम 1 by 1 फैक्टर्स पढ़ते हैं उस वक्त हम दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट रखते हैं। जब हमने प्राइस पढ़ा तो दूसरे फैक्टर्स हमने कांस्टेंट रखे। जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं तो दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट है। So here supply may decrease. So there is inverse relationship between cost of production and quantity supply. Quantity. So this is the second factor, main factor. अब third factor है, third factor है price of related goods. Very important. Price of related goods. Price of related goods. Substitutes and complementary. Substitutes and complements. The increase in price of related goods decrease the supply of the commodity, and decrease in the price of related goods increase the supply. So there is inverse relationship between change in price of related goods and change in supply. There is inverse relationship between quantity supply and price of related goods. That means we can write down here the increase in, आप लिख भी सकते हो, increase in price of related goods decrease the supply of commodity. याद है related goods क्या होता है? तो ये क्या होता है? Decrease the supply of commodity. जो substitutes होते हैं, जो substitutes होते हैं, supply of commodity, and decrease in price of related goods increase the supply of a commodity. Other thing is remaining same. Other thing is being same. So अगर related goods का जो प्राइस है वो अगर कम होगा तो सप्लाई इंक्रीज, अगर रिलेटेड गुड्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा तो सप्लाई ऑफ दिस डिक्रीज हो जाएगी। The supply of good under discussion decrease. इसका मतलब क्या है? अगर good X and good Y, they are related to each other. They are substitutes to each other. Yes, sir. They are substitutes to each other. For example, इसका प्राइस, फॉर एग्जाम्पल हम X की सप्लाई पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं X की सप्लाई कम होगी या ज्यादा होगी अगर price of good Y changes. If price of good Y, what happens to the supply of good X if price of good Y changes? इसका अपना प्राइस सेम रहता है, own price of the
Yes, sir. own price of the good remains. Commodity. अगर गुड Same. एक्स की सप्लाई हम पढ़ते हैं, गुड एक्स की सप्लाई हम, फॉर एग्जांपल इसका पढ़ते हैं। प्राइस है, इसकी क्वांटिटी सप्लाई है, इसका भी प्राइस है, इसकी भी क्वांटिटी, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की अपनी अपनी सप्लाई शेड्यूल है। आप समझते हो मैं क्या बताता हूँ? Yes, sir. every product have its own supply schedule. किस तरह उसकी सप्लाई चेंज हो जाती है? ड्यू टू चेंज इन इट इज प्राइस, ड्यू टू चेंज इन इट इज प्राइस और ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। अगर फॉर एग्जांपल गुड एक्स का प्राइस 10 रुपया है एंड इट इज सप्लाई इज 150, जहन लगाना पूरा, हम सप्लाई पढ़ते हैं गुड एक्स की, हम दिस इज आवर गुड अंडर डिस्कशन, ये गुड हम प्रोड्यूस करते हैं, ये गुड जो है गुड वाई ये सबस्टिट्यूट है इसका, एग्जांपल इट इज अनदर गुड व्हिच इज रिलेटेड टू एक्स। अगर इसका प्राइस फॉर एग्जांपल 20 है, इसकी सप्लाई फॉर एग्जांपल 100 है, हम कहते हैं इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, करो इसका प्राइस इंक्रीज, इसका प्राइस इंक्रीज करो 30, इसका प्राइस इंक्रीज करो 30, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई मुझे बताओ, इसका प्राइस इंक्रीज हो गया, इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? ज्यादा, इसकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इट गोज टू 150। अब इस इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वाई से क्या असर पड़ा इसकी सप्लाई? सर इसकी सप्लाई कम हो जाएगी, इसकी सप्लाई कम हो जाएगी विदाउट चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस यस प्राइस सेम ही रहेगा, लेकिन इसकी सप्लाई अचानक कम होगी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ दिस गुड वाई। यस सर, रिलेटेड। अब देखो ये जो कम होगी सप्लाई 50 यूनिट्स की, 50 यूनिट्स की, इसका मतलब है वो प्रोड्यूसर्स जो ये एक्स बनाते थे, जो एक्स बनाते थे, those producers who were producing X previously, when they saw that price of Y has increased, जब वो देखेंगे कि Y का प्राइस इंक्रीज हो गया, वो शिफ्ट करेंगे फ्रॉम X टू Y। उन्होंने यहाँ प्लांट बंद किया, अब उन्होंने छोड़ दिया X को बनाना, Y बनाना, क्योंकि उनको यहाँ ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन लगता है, क्योंकि उसका प्राइस इंक्रीज हो। Yes, sir. That is why we say that increase in price of related goods decrease the price, the supply of the commodity, and decrease in the price of, अगर इसका प्राइस कम होगा तो लोग यहाँ से शिफ्ट करेंगे, यहाँ ये बनाएंगे, अब गुड वाई नहीं बनाएंगे, गुड एक्स बनाएंगे। जब गुड एक्स ज्यादा बनेगा, सप्लाई ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा होगी। दिस इज थर्ड फैक्टर। फोर्थ फैक्टर आप आसान सा उठाएंगे, नंबर ऑफ सेलर्स, इन द मार्केट, नंबर ऑफ सेलर्स। अगर नंबर ऑफ सेलर्स, इट इज वेरी सिंपल, व्हेन नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट इंक्रीजेस, द सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस। व्हेन नंबर ऑफ सेलर्स increase in the market, the supply also increase. Supply also increase. If number of sellers decrease, the supply also decrease. Supply. अगर हमारा मार्केट में ज्यादा दुकानदार आ गए, प्रोड्यूसर्स आ गए, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। अगर कम दुकानदार बैठेंगे, वहां प्रोड्यूसर्स बैठेंगे, तो सप्लाई कम। ठीक है? So this is very simple. और एक है चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी का भी
जबरदस्त role है in changing the supply. Technology has a great vital role in changing the supply. The change in technology or new discoveries reduces the cost of production. So we can say introduction of new technologies, introduction of new technologies, new and advanced technologies, advanced technology. उससे क्या होता है, मैं X बनाता increase था, हो जाती है supply. decrease हो. Introduction of new and advanced technology decreases cost of production. Decreases Yes, sir. cost of production. yes sir, Decreases cost of which production, increases supply. Which increases supply. Supply and vice versa. अगर हम absolute technology and vice versa, हैं? And vice versa. yes sir, अगर पुरानी technology हम use of old technology, absolute technology, increase the cost of production, we decrease the supply. So if new technologies are introduced, new discoveries are Advanced made technology. in the production, so that decreases the cost of production, which increases the supply. cost of production, Supply. Yes, sir. एक important factor जो मैंने last पे रखा है, that is price expectations. Price Expectations. expectations, एक तो हो गया own price, वो खुद चेंज होता है. दूसरा है price expectations. If producers or sellers expect that prices will increase in future, अगर producers या sellers ये expect करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आगे फ्यूचर में कल परसों हफ्ते के बाद 15 दिन के बाद 10 दिन के बाद 1 महीने के बाद इस X का प्राइस बढ़ जाएगा, they will supply yes, less sir. to the market. They will supply less to the market. Less to the market. Supply less means more stock, increase in stock. Yes, sir. Excess हो जाएगा. Supply less means more stock. Supply more means less stock. Less stock. Less stock. Yes. If sellers or producers expect rise in price in future, they will supply less to the market. They will supply less to the market. Less to the market. That means supply will decrease. Yes. So when sellers or producers expect a price rise in future, they will supply less to the market at present. Yes, sir. Yes, sir. At present. So if sellers will expect that price will increase in future, they will hold and will supply less to the market. If they expect, At present. दूसरा context ये है, if they expect price fall in future, अगर उन्होंने ये expect किया कि future में इसका price कम हो जाएगा, the supply they will supply more. They will supply more or supply will increase. Supply will increase. So this is very important factor, price expectations. Price expectations. Yes, if they expect rise in price in future, they supply less. If they expect price fall in future, they will supply more and more. So these are some factors, very important factors which we discussed, that is price of a commodity, own price of the commodity discount कहते हैं, cost of production, इसी तरह number of sellers, इस तरह price of related goods हैं, change in technology है, price expectation. Number of sellers. तो मैंने आपको क्लास में भी ये थोड़ा टिप दे दिया है. If you have less time in exam, time management is important in the examination. अगर आपको लगता है कि हर एक पॉइंट को मैं fully explain नहीं कर सकता हूं, तो कम से कम सारे पॉइंट्स तो लिख लो. It is better to write all the points in brief rather to explain
each and every Describe, yes. point. तो हर एक पॉइंट को उस टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप डील कर लो उसके साथ. Yes, sir. जब क्वेश्चन आपको आता है सारे 6-7 पॉइंट्स आपको पता है, लिस्ट कर दो उनको. These are Yes, the sir. factors which affect the supply of a commodity. It is price of the commodity, cost of production, number of sellers, price of related goods, change in technology, price expectation. That is all. That is all. अगर प्राइस बचे तो एक एक करके एक्सप्लेन भी करो, एक एक दो लाइन्स में. Yes, That is sir. also good. That is also good. But कोई पॉइंट रहना नहीं चाहिए. अगर आपने 3 पॉइंट्स फुल्ली एक्सप्लेन किए, 4 रह गए, तो आपको 3 ही नंबर आएंगे, 7 नहीं आएंगे. उसमें Yes, sir. एक्सपेक्टेशन है कि आप साथों के साथों ले सकते हो, क्योंकि आपने 7 पॉइंट दिखा दिए पेपर पे. So this is all about the determinants of supply, or how supply changes in the market. What are the factors which affect the supply? Thank you very much. Okay. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you. Khuda Okay, sir. Hafiz. Okay. Allah